Next question is select incorrect statement. Scythium is complex type of inflorescence in the genus Euphorbia. Thyrase is inflorescence of Amaranthacea. Verticillaster is characteristic inflorescence of family Lamiaceae. Hypanthodium is typical inflorescence of fig. अब आप आसानी से इसमें बता सकते हैं कि कौन सा आपका गलत है. आपका आंसर जो गलत है वो है Thyrase is inflorescence of Amaranthacea. Then select correct statement. Pomegranate, Punica granatum is a pome fruit. Tomato and brinjal are drupe fruits. Pepo is a fruit of cucurbits formed from inferior ovary. Cinchonus is a fruit of jackfruit. कटहल. आपको बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट. सो करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस कि जो पीपो इज ए फ्रूट ऑफ कुकरबिट्स फॉर्म्ड फ्रॉम इंफीरियर ओवरी. जो आपका कुकुम्बर होता है, लौकी होता है, आपके करेला होता है, ये सारे के सारे पीपो फ्रूट्स हैं और दे आर द कुकरबिट टाइप ऑफ फ्रूट. कुकरबिट फैमिली के फ्रूट्स हैं. ये सारे इंफीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं. ठीक है. बाकी के फ्रूट्स की क्वालिटीज आप स्टडी कीजिएगा. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द प्लांट स्पेसिमेंस आर इन द हर्बेरियम ऑफ. कहाँ के हर्बेरियम में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पेसिमेंस हैं? आंसर नंबर इज 2. द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, पेरिस, फ्रांस. Next question is select incorrect statements. Carolus Linnaeus established the fact of sexuality in flowering plants. Carolus Linnaeus published Species Plantarum in 1753. Carolus Linnaeus established the binomial system of nomenclature. Linnaeus did aim at natural classification of the plant. तो basic question है. Incorrect statement आपको देखना है. Carolus Linnaeus established the fact of sexuality in the flowering plant. Next question is classification of the seed plants presented by Bentham and Hooker is considered the most well-developed natural system. This was published in a 3-volume work Genera Plantarum. One major demerit of this classification is this: the gymnosperms are placed between dicotyledons and monocotyledons in class 2. Next question, select incorrect statement. Wood represents secondary xylem constituting the bulk of the trees and shrubs forming through the activity of the vascular cambium. Wood consists of the tracheids and vessels. Angiosperm woods are never vessel-less. Angiosperm ancestors are probably vessel-less. Incorrect statement आपको निकालना है. So the answer is this. Angiosperm woods are never vessel-less. Next question. Select incorrect statement. The lowest number of the chromosome n is equal to 2 in plants is recorded in Haplopappus gracilis. The record of high chromosome number is found in Ophioglossum. The algae Spiroglara cylindrica also contains n is equal to 2 chromosomes. Breadwheat has n is equal to 14 chromosome. आपको बताना है incorrect statement. और breadwheat जो है n is equal to 14, ये इसका गलत आंसर है. Next question is select incorrect statement. Morphine is produced by Papaver seminiforum. Atropine is produced by Atropa species. Alkaloids are present in the specialized part or tissues of the plants. Marijuana, bhang, is produced by the sunham. So the incorrect statement is marijuana or bhang is a product of sunham plant. Next one is select incorrect statement. Apocynaceae and Asclepiadaceae belongs to series Rubiaceae and Asteraceae, and in series 3 bicarpellate of. Next is select incorrect statement. Apocynaceae and Asclepiadaceae belongs to series 3 bicarpellate of
Gamopateli. Rubiaceae and Asteraceae are in series 1 inferi of Gamopateli. Primulaceae and Lamiaceae are in series 2 heteromera of Gamopateli, and Rutaceae belongs to series 2 Disciflorae of the Polypetali. आपको इसमें इनकरेक्ट आंसर बताना है, एंड इनकरेक्ट इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट. Chenopodiaceae and Amaranthaceae are in series Curvibambraceae. Gingiveraceae members are rhizo. देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. Gingiveraceae members are rhizomatous plants. हालांकि इसमें ये भी सही है. Pometogitomenaceae is a family of dicot. ये भी सही है. इसके अलावा Euphorbiaceae and Moraceae are Gamopateli. यहाँ आपके पास दो करेक्ट आंसर्स हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने माना नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Curcuma longa हल्दी belongs to the family Gingiveraceae, Musaceae, Cananaceae और Sajaceae family. So answer is Gingiveraceae. Khejdi Prosopis is a member of Mimosoideae. It is a subfamily of Leguminosae. Now next question is match the following: black pepper, clove oil, गिलोय, छोटा गोखरू. अब हम किसी एक को तो जानते हैं, लाइक ब्लैक पेपर, पेपरवर नाइग्रम. पेपरवर नाइग्रम को हम जानते हैं, यानी ए में 2. तो आपका आंसर हो गया दिस वन. इसको देखिए, पेपरवर नाइग्रम, ब्लैक पेपर, क्लोव ऑयल, सिजीजियम एरोमेटिकम जो कि लौंग का नाम है. इसके बाद देखिए गिलोय जिसका नाम होता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, छोटा गोखरू जिसका नाम होता है ट्राइबुलस टेरिस्टेरिस. अब आप इसके नाम याद करने के लिए आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको कई टेक्निक्स बताई गई होंगी, उसी के आधार पे आप याद करते. जैसे लौंग के तेल की अलग से खुशबू होती है, तो एरोमेटिका वहाँ आएगा कहीं ना कहीं, तो सिजीजियम एरोमेटिकम आपने याद रख दिया. नाइजीरिया में जो लोग होते हैं वो अधिकतर निग्रो टाइप के होते हैं, काले रंग की मिर्च होती है, तो आपने उसको बोल दिया पेपरवर नाइग्रम. ऐसे करके आप कुछ हार्ट के लिए अच्छा होता है गिलोय पीना, तो आपने बोल दिया टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया. इस तरह से आप अपने कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं नाम याद करने के, क्योंकि बॉटनी में अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं वो नामों के साथ जरूर आते हैं. सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जीनोम इज सम टोटल ऑफ द जेनिक इंफॉर्मेशन. DNA, number of the chromosomes of a species in a single haploid cell. Biodiversity is richness of the species and genus in an environment. Domestication is bringing wild germplasm under home management. And plastid in green plants have eukaryotic type of genes. आपको incorrect statement बताना है. तो आप जानते हैं जो plastids हैं वो green plants में नहीं मिलते, बाकी सारा सही है, आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा. सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आइसोजाइम्स आर मल्टीपल. सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Apomixis is defined as the asexual formation of a seed from maternal tissues avoiding the process of meiosis and fertilization. Apomixis occurs in citrus and mango. Penicetum species do not exhibit apomixis. And apomatic seeds are clone seeds. Incorrect statement आपको दिखाना है इसका. Penicetum species do not exhibit apomixis. All are correct statements. Next one is select incorrect statement. Plant perpetuate in nature through endosperm. Select incorrect statement. Plant perpetuate in nature through endosperm. Endosperm of the several plants have been cultured to produce triploid plants. Endosperm tissues of most of the angiosperm are triploid and are storage tissue. In general, endosperm tissues have
higher doses of the genes of female parent? The incorrect answer is this. Not plant, no, it is embryo. Next one. Successful attempts were made through anther culture for protection of the haploid plant is. किसने किया था haploid culture? शिप्रा गुहा मुखर्जी and S.C. माहेश्वरी. Next question. Select incorrect statement. आपको इसमें से incorrect statement बताना है. So the incorrect next question is select incorrect statement. Embryophytes and algae are distantly related, yet they are similar in their positions of the carbohydrate-rich cell wall. Cell walls are integral importance, being involved in many physiological processes. Bacteria and mycoplasma have cell walls composed of peptidoglycan. Cell wall of the Oomycetes do not contain chitin, which occurs in the cell wall of the true fungi. इनकरेक्ट हमको स्टेटमेंट इसका बताना है. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 3. बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा हैव सेल वॉल्स कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. So the incorrect statement is Western blotting is based on principle of nucleic acid hybridization. बाकी जितने भी statements हैं they all are correct statement, like the pairing of complementary deoxyribonucleic acid DNA strand produce DNA RNA hybrids, pairing of complementary DNA RNA strand produce DNA RNA hybrids. Then hybrid formation are based on the properties of the specific hydrogen bond forming between complementary nucleoid base pairs. These all are correct answers. Next question. Select incorrect statement. All embryophytes have true vascularized leaf. Correct statements को देखते हैं हम. Leaves are produced in succession on the shoot apical meristem of a plant. Leaf morphogenesis includes initiation, acquisition of sub-organ identities and tissue differentiation. The expression of various genes is involved in leaf morphogenesis. So the wrong answer is all embryophytes have true vascularized leaves. Next question is select the correct statement. SAMs contain a population of the cell SAM Next question is select incorrect statement. Wood secondary xylem is manufactured by a succession of a major steps including कौन-कौन से steps होते हैं? Formation of hardwood with functional parenchyma. Next question is genetic male sterility is governed by nuclear gene, in most of the cases by recessive gene. However, it is rarely controlled by single dominant gene as in मेल स्टेरिलिटी कहीं कहीं पर एक सिंगल डोमिनेटिंग जीन के द्वारा भी डोमिनेंट जीन के द्वारा भी कंट्रोल होती है. और वो किस में होती है? आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, सनफ्लावर. नेक्स्ट वन इज heteromorphic sporophytic self compatibility is found in. Heteromorphic sporophytic self compatibility is found in Primula species.